Friends, please give a warm welcome to Ashwin Patni of Axis Mutual Fund, who is right now with us. Hi, Ashwin. Welcome to the Master Stroke Show. Hi, hello everyone. Really happy to be part of the show and looking forward to a good discussion. Thank you so much. Ashwin, just to give you an idea about Master Stroke, we are a strong community of 2,200 regular use subscribers of Master Stroke. And every Saturday, we do this event where hundreds of people join from across the country. We have members from 380 locations, and they are growing. And we'd love to have your thoughts on global investing. And I started with a primer that in global investing can really be very interesting. So what are your first thoughts? How are global markets looking at this point of time, Ashwin? So first, let me start by saying that thoda sa you stole my thunder by showing that chart. It was a really informative chart in terms of just how we have seen returns change year on year for different asset classes, and obviously we'll discuss that in more detail. But global markets have been tough in the last 12-18 months, as many of us may have seen some of the big events that have been going on in the global markets. If I had to name two or three, of course, the big driver has been the conflict, Russia-Ukraine, in the last, say, 12 months or so. But before that also, there was this big disruption, which is the economy has gone through this huge sort of wave of two massive disruptions back to back. First, there was COVID and how everyone responded to COVID, and in terms of loosening monetary policies, making money light, easier, liquidity easier. And everyone thought pandemic would be a huge challenge, but effectively the markets actually took that liquidity and actually had a great ride. And on the other side, as we came out of the pandemic and when things started normalizing in the real world, actually we have seen the after effects of that liquidity in the form of higher inflation throughout the world, disruptions throughout the world, supply chain getting issues, getting choked throughout the world. Leading to much sharper, large interest rate rises around the world. Of course, we've seen it in India as well, but globally the impact has been far more acute, I feel, than India has seen, and that has played into the markets. If you combine these two big shocks, one is the supply chain / inflation shock, and the other one has been the conflict and its repercussions. जो आपने रशिया यूक्रेन के लिमिटेड नहीं है, वो एक्चुअली दे आर प्लेइंग आउट एवरीवेयर. तो वो दोनों का अगर हम if you combine these two, it's been a very tough ride. Markets have been down. For those of us who have invested in global markets prior to last year, their portfolios would have seen very large drawdowns, in some cases as large as 20 to 30% in fact in the last 12-18 months. So it's been a tough environment. And it's always good at the back of such tough environment to come and talk about why you should invest, because that is always the time जब लोग अपने आप को थोड़ा क्वेश्चन करते हैं. लोग बोलते हैं कि यार ये जो हमने assumption लगाई थी जो 2-3 साल पहले, हमने एक काफी अच्छा एक phase देखा था मार्केट में, जो people were allocating to global started allocating in a small way but in a significant way. तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं last 12-18 months we started seeing that somewhere that people are coming back, and we also get a lot of questions on this. So yes, it's a very interesting time to have this discussion in that sense. So Ashwin, if any investor wants to take exposure in international funds, what would you advise to them? अभी recession है, currency devalue हो रही है, volatility इतनी ज़्यादा है, last year returns नहीं आए थे. What would you suggest to such investors? Why should they do it? I would suggest that if I shift the parameter and मैं बोलता हूँ कि आप global छोड़ देते हैं, let's come to India. And let's look at Indian equity markets. आज से हम 20 साल से 25 साल से हम इंडिया में we are investing in equities, and we have seen the power of equity investing in the long term. But every year, there are always, if you want to search for risk, if you want to search for negativity, every year you can find 3 reasons why you should not invest right now but wait for 6 months. मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ. Every year in India today, people have, if you look back last 10 years, right from things like issues like election, issues like monetary policy, issues like inflation, issues like slowdown in growth or rapid growth or global scenarios. कितनी सारी चीजें हम बोल सकते हैं जो
people get, those who wanted to find an excuse, there are always ready excuses available why we should wait and watch, why things are risky. But the power of equity is compounding. आपको अगर इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टेड रहेंगे, अंडरलाइंग बिजनेसेस दे फाइंड solutions, they find ways to grow, and ultimately as shareholders you benefit from that growth over the long term. Timing बहुत easy नहीं है, कोई भी बहुत सक्सेसफुली नहीं कर पाता है. Same, therefore, taking the same logic to global investing. If you look through, despite the last 1 year of 15 months of challenges, if you look at the 10-year data, if you look at the 5-year data, if you look at the 15-year data, जो आप genuine long-term investors हैं, obviously India में हमने recently invest किया है, but जो globally लोगों ने long-term invest किया है, that the effect has been, uh, uh, almost in the double digits. If you say even in dollar terms, people have Correct. seen 10-year, 15-year numbers. The returns have been very, very good. No So, worries, your audio is good. Don't worry about that. okay. So in that sense, we have seen that power even in the global context. जो हम इंडिया में बोलते हैं कि long term, if you look at Indian equity market, 12-15% return हमने enjoy किया है over the last many years, 15 years, 20 years. वैसे ही globally people have enjoyed that returns over the last 10-15 years. So yes, cycles will be there. In fact, आपकी table में जहाँ global investing, international, जहाँ some years of course they've given very good returns and top of the pile, of course some returns they are also a little bit bottom of the pile. So that is part of the cycle. So I would say investors, the best suggestion I would have is ज़्यादा short term पे focus ना करें, medium to long term के ऊपर अपना focus बनाए रखें. On that basis, invest in this. And if you are able to take advantage of volatility by averaging out, by staying invested, and then you will see on the other side the power of that long term compound. Wonderful. Let me ask some of the people. The two people have written audio is low. Others, can you comment? Is the audio okay to you? I will move on. So, Ashwin, जितने भी फंड मैनेजर आते हैं, जब भी वो बात करते हैं, हम पिछले 10 सालों से 20 सालों से सिर्फ इंडिया स्टोरी की बात सुनते हैं. We only hear about the India story, and it is engraved in our mind that India is shining. And then suddenly this global investing. Why should we go outside? Is India not good enough? What is the point of diversification? How will you address this? If India is good and next 15 years, India is looking good and we get whatever, 12-15% GDP is growing 12-13% in nominal terms. And if we get 13% return, why we need to diversify? So, मैं ये question आपसे इसलिए करना चाहता हूँ कि MFDs भी ऐसा सोचते हैं कि इंडिया स्टोरी अच्छी है और इंडिया में पैसा लगाओ. तो इन्वेस्टर को तो जो चीज एडवाइजर्स RIAs डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचेंगे वो इन्वेस्टर्स ले लेते हैं. तो हाउ विल यू कन्विंस MFDs about diversification, or why should they look beyond India? So 2-3 things I will try to sort of say to hopefully I can convince some of the people here. एक तो क्या है कि जब हम कहते हैं कि कहीं कोई एसेट क्लास अच्छा है, तो इट इज नॉट नेचुरली फॉलोइंग फ्रॉम दैट कि हम कह रहे हैं कि दूसरा एसेट क्लास खराब है. बहुत सारे अच्छे हो सकते हैं. इनफैक्ट पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज दैट ओनली कि आप काफी सारे अलग एसेट क्लासेस में पार्टिसिपेट करके अपनी रिस्क को कम कर पाते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर नॉट लिमिटेड टू वन प्लेस और टू प्लेसेस. बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत जगह पे हैं. In the same way, if you look at equity investing, the point we are making is not that Indian equity is good or bad. We have seen the power, and hopefully we all understand the power. That power has worked last 20-30 years. It will work for the next 20-30 years. I don't think that is an issue at all. The issue is, as investors are becoming more mature, as our investment pools are becoming bigger, we also want to see what other opportunities are there. And let me explain it's a risk issue also. So let me explain in another way. अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं और आप अभी मैं आपकी स्टॉक सुन रहा था और आप एग्जांपल दे रहे थे सेक्टर्स का एंड डिफरेंट सम ऑफ द स्टॉक्स आपने बताया कि एक स्टॉक में आप करेंगे वर्सेस 3 स्टॉक में आप करेंगे वर्सेस 10 स्टॉक में आप करेंगे तो क्या इफेक्ट होता है. तो जब आप पोर्टफोलियो में मान लीजिए 10 या 25 स्टॉक खरीद रहे हैं, तो जो इसका मतलब क्या ये कहना है कि आपका जो पहला स्टॉक है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा इसलिए आपने दूसरा लिया, या दूसरा अच्छा नहीं लग रहा इसलिए आपने तीसरा लिया? बिल्कुल नहीं. आपको भी पता है कि रिस्क होती है. आपका कितना ही अच्छा कन्विक्शन हो, आप सारा का सारा पैसा एक स्टॉक में या सिर्फ 5 स्टॉक में नहीं लगाते, आप पोर्टफोलियो बनाते हैं. उसी तरह से हम
जब एसेट क्लासेस में when we trying to see, then we are trying to make a portfolio across asset classes also. कि इंडिया कितना भी अच्छा नहीं हो, लेकिन इंडिया में ईयर ऑन ईयर रिस्क कैन कम। Correct. अब जैसे आज से बहुत साल पहले वो हमने एक टेपर टेंट्रम देखा था 2011-12, जब हमने रिस्क इंडियन मार्केट में थोड़ी ज्यादा आई थी, इंडिया में इफेक्ट ज्यादा आया था, मेनी ग्लोबल मार्केट्स डिड नॉट गेट अफेक्ट। या हम कोई इलेक्शन सिनेरियो के देखे, 2014 था जब, या 2000 उसके पहले 2004 था, जब जनरल इलेक्शन इंडिया में होने की वजह से मार्केट में हमने काफी अनसर्टेनिटी वॉलिटिलिटी देखी थी, जो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट स्पेसिफिक थी, जहाँ ग्लोबल मार्केट से कोई लेना Correct. देना नहीं था। तो that is the power of diversification, that when you have your money everywhere, then somewhere that risk benefit and absolute return हमने जो देखा वो तो ठीक ही है ग्लोबल इक्विटीज का। और इसमें मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि एक थीम्स का भी इम्पोर्टेंस है। आज इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है और बहुत डाइवर्सिफाइड है, लेकिन इंडियन मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे सर्टन सेक्टर्स एंड थीम्स डोमिनेट। आप देखेंगे फाइनेंशियल्स है, कंज्यूमर्स है, इंडस्ट्रियल्स है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में जाएं तो ग्लोबल मार्केट्स में ग्लोबली बड़ी कंपनीज जो जो हमको एक्सेस करने को मिलता है, उससे हमको कई नई थीम्स भी देखने को मिलती है। सबसे सिंपल और पावरफुल एग्जांपल है टेक्नोलॉजी एज अ थीम। आज पूरा जो टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम है, और टेक्नोलॉजी से सिर्फ मैं इंटरनेट या डिजिटल कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर पूरा इकोसिस्टम, चाहे जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है कोई, या टेक्नोलॉजी में आप मान लीजिए जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, या जो राउटर्स है, या जो सो इट इज द इंटायर इकोसिस्टम की जो चाहे वो इनेबलर है टेक्नोलॉजी के, या टेक्नोलॉजी कंपनियां खुद हैं, या ई कॉमर्स डिजिटल कंपनियां, ये पूरा इकोसिस्टम जो है ये ग्लोबल मार्केट में एंड ग्लोबली किसी एक देश में नहीं है। आपको कोरिया में भी है, आपके यूके में भी है, आपके यूएस में तो खैर बहुत सारे हैं, यूरोप में है। तो ग्लोबली आप इन काफी सारे सेक्टर्स को भी एक्सेस कर पाते हो। ग्लोबल बिग ब्रांड्स जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, मेगा ब्रांड्स हैं, जो ग्लोबली बहुत सक्सेसफुल है, वो हम एक्सेस कर पाते हैं। बड़े ग्लोबल सेक्टर्स हम एक्सेस कर पाते हैं। तो दैट इज द एडिशनल बेनिफिट वी गेट, कि आपको बहुत सारे एडिशनल सेक्टर्स, थीम्स जो जो इंडिया में शायद उस तरह से आपको अवेलेबल नहीं है, वो आपको भी एक्सेस करने का चांस मिल पाता है। So Ashwin, one of the things MFD struggle with कि अगर जाना है इंडिया के बाहर ग्लोबल में, तो किधर जाना है? ताइवान जाना है, चाइना जाना है, अमेरिका जाना है, इमर्जिंग मार्केट जाना है, जापान जाना है। There's so many funds. How do you choose, and then how do you sub classify and sub allocate? So I feel it is a logical thing. Again, every time I'm trying to give India example, because the easiest thing is, for most of us, we hopefully have gone through this journey in India. जब इंडिया में इक्विटी मार्केट में लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू किया, तो सबसे पहले सिंपल एक डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया। जैसे जैसे सोफिस्टिकेशन बढ़ी, हमने उसमें सेगमेंटेशन लगाया, चाहे लार्ज मिड कैप हो, चाहे सेक्टोरल हो, चाहे अलग अलग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग हो। तो आई वुड से कि आज हमारी जो लर्निंग सोफिस्टिकेशन वगैरह ग्लोबल मार्केट्स की तरफ है, दैट इज ऑल्सो एट द प्रोबेबली एट द स्टार्टिंग। तो जब स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो जितना हम डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि दिस इज अ फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। So I would say the logical first thing is to start with a global strategy. So something that is not limiting to one country or set of countries. जो ग्लोबल फंड होते हैं, तो ग्लोबल मार्केट पे तीन चार तरह के फंड होते हैं, जैसे आपने बताया। लेट मी ट्राई टू जस्ट क्विकली एक्सप्लेन फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। Global funds are essentially funds which can go anywhere. So they are not limited to only one country or set of countries. Globally, there are two big set of countries which are, one is called developed market, one is called emerging. Developed markets, as we all can imagine, are the big developed countries like US, UK, Europe, Japan, वगैरह. And emerging markets are the fast-growing next set countries, including India, China, some of the other countries. Global funds are essentially funds, so they are not limiting only to one geography or only developed or emerging, but can actually invest in the best ideas everywhere, because good companies are coming out of every country. आज चाहे चाइना इंडिया में भी हम अच्छी कंपनियां हैं, चाहे डेवलप्ड मार्केट्स में भी अच्छी। So the easiest thing to do is to look for a good global fund. Now the second thing is to then say that okay, fine, I have invested in global, then can I target certain geography? तो उन geographies में जैसे US comes as an example, China comes as an example. Why? Because these are very large
मार्केट्स, वेरी लार्ज इकोनॉमीज विथ वेरी वेरी लार्ज मार्केट्स, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का चांस मिल पाता है। एंड ऑल्सो बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, वहाँ पे जो सेक्टर स्टाइल चलती है वो इंडिया से थोड़ी से अलग तरह की मिलती है आपको, सो इट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। सो आई वुड से दीज आर द टू थिंग्स दैट आई वुड सजेस्ट। पहले आप ग्लोबल पे रहिए, ग्लोबल इज ऑब्वियसली a very easy thing for everyone to understand and appreciate, एंड अगर वहां से आपको कंट्री में जाना है तो प्रॉब्ली यूएस और चाइना आर प्रॉबेबली टू लार्ज बकेट्स जो आप देख सकते All right. Now, what do you think about this rupee devaluation or dollar appreciation? How much impact this can have on the client's portfolio? And is it one of the reasons you should diversify? हैं। सो आमतौर पे नॉर्मली व्हाट वी हैव सीन इज दैट इन इंडिया टिपिकली बिकॉज वी रन अ करंट अकाउंट डेफिसिट, and just for everyone's benefit, current account deficit is largely driven by the fact that we import savings from the rest of the world, because we are a trade deficit. We have a large trade deficit, uh, uh, which is what is causing our currency to be, in very simple terms, under pressure. So somewhere we also have a little bit historically a situation where we used to have, and in fact even today we have a problem of a twin deficit. कि fiscal deficit हमारा होता है, which is typically we run something which is reasonably large, because we are still a very a country which is still very, हमारी per capita income आज भी काफी कम है, we are still growing, so we are at a phase where we need to invest back, etc. We don't have that same luxury of resources जो developed economies के पास है। तो वी रन फिजिकल डेफिसिट, वी रन करंट अकाउंट डेफिसिट। जब ट्विन डेफिसिट होता है तब करेंसी के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है। तो नेचुरली एज मेनी ऑफ अस विद लॉन्ग मेमोरीज विल रिमेंबर, अगर मैं डॉलर रुपए की बात करूं तो कभी 20 होता था, 30 हुआ, फिर 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, आज तकरीबन 80 के आसपास है। तो ये एक ईयर ऑन मंथ वॉलेटिलिटी रहती है, बट एक ये ट्रेंड क्यों है? क्योंकि एक देयर इज अ नेचुरल pressure on rupee to depreciate because of this structural thing that we have in India. तो जब आप इंडिया से बाहर सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा ये रूपी का ये हेज करने में मिल जाता है, या रूपी का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। इसको एक और तरीके से देखने का ये है कि मेनी ऑफ अस हैव ग्लोबल एस्पेक्ट्स, चाहे वी हैव चिल्ड्रन हु वी हैव टू सेल अब्रॉड, और वी हैव some plans to use currency abroad for some business purposes or something else. So global investing also helps us sort of de-risk it in that. So I would say yes, it does help, but it is not the main thing, because ultimately the reason to invest is not dollar rupee. The reason to invest is the opportunities that we are getting. वहाँ पे हमको एक बड़ी कंपनीज हैं, बड़े सेक्टर्स हैं, वहाँ ग्रोथ है, उसमें पार्टिसिपेट करने का चांस मिल रहा है। दैट इज द मेन रीजन टू इन्वेस्ट, नॉट द करेंसी। All right. So what Ashwin is saying is that any appreciation that you get from the currency is a bonus. And one interesting point you mentioned, and which can be a selling point for MFDs to the clients to pitch international and global fund, is if your child is thinking about studying abroad, then it's a very natural hedge for you to start investing in the global market, so that for whether returns are low or high or moderate, nobody knows, but at least you are currency protected in that case. That अगर आपको यूएस के अंडर ग्रेजुएशन के लिए भेजना है, साल के 50-60 लाख रुपए लगने हैं, which is around $70,000, and tomorrow for any reason 80 becomes 100, your cost goes up. So that's a very natural hedge, and clients will buy this for education. Um, so, uh, so coming on to Axis, what are the international funds or global investing options do we have in Axis? So I think we have a pretty broad basket. So in Axis Mutual Fund, we have been probably one of the fund houses जो काफी हमने एक सोच समझ के, काफी फोकस के साथ ग्लोबल ऑप्शंस बनाने की कोशिश की है इन्वेस्टर्स के लिए। तो the basket is very broad. It includes both active and passive products. On the active side, we have three ideas: Global Alpha, Global Innovation, and Greater China. तो दो फंड्स तो ग्लोबल हैं, उसमें से फर्क ये है कि एक जो है वो ग्लोबल डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी है, और एक ग्लोबल जो जिसे कहते हैं इनोवेशन, तो जो ज्यादा फास्ट ग्रोथ, हाई इनोवेटिंग सेक्टर्स को टारगेट करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। तो ये दो ग्लोबल प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा ग्रेटर चाइना, जो चाइना और चाइना के सराउंडिंग मार्केट जैसे ताइवान, हांगकांग, इन एरियाज में इन्वेस्ट करता है।
अगेन चाइना इज अ हाई ग्रोथ एनवायरनमेंट, तो ये भी एक तरह से आप मान सकते हैं कि ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा हाई ग्रोथ सेक्टर्स में फोकस करके इन्वेस्ट करता है। और जो एक फाइनल हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कुछ महीने पहले, वो था नैस्डैक। सो नैस्डैक अगेन इज अ मोर टेक्नोलॉजी हैवी और ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर। सो कॉन्शियसली हमने, अगर आप सेगमेंट देखें, एक तो खैर ग्लोबल डाइवर्सिफाइड है जो एक काफी सारे लोगों को पसंद आ सकता है, बट उसके अलावा जो हमने थीम सिलेक्ट की है वो ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड सिलेक्ट की है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आज हम इंडिया से जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमको इंडिया के ग्रोथ एनवायरनमेंट की आदत है। एज एन इन्वेस्टर वी आर हंग्री फॉर ग्रोथ। हमें आदत है 12-15% ग्रोथ देखने की, इन सम केसेस 20% ग्रोथ देखने की। ग्लोबल इकोनॉमी में आपको हर तरह की कंपनियां मिलेंगी। कुछ कुछ मच्योर कंपनियां हैं जहां ग्रोथ बहुत लिमिटेड है, कुछ फास्ट ग्रोइंग कंपनियां हैं बिकॉज उनके सेक्टर्स आर ग्रोइंग रैपिडली, या वो एक छोटी कंपनियां हैं जो ग्रो कर रही हैं। तो कॉन्शियसली हमने ऐसे प्रोडक्ट लाए हैं जो जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, क्योंकि इंडिया से जब इन्वेस्टर जा रहा है उसको वो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे ऐसा पोर्टफोलियो मिले जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो। So again, maybe my last question on this, and I will insist on this for you if you can give some idea. You have a Nasdaq fund, you have a China related fund, you have a global investing fund. पैसा तो लिमिटेड है क्लाइंट के पास और एमएफडी के पास में भी, और हर कोई इतना ज्यादा डिवर्सिफिकेशन भी नहीं कर सकते कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्लोबल बेचा नहीं और जब बेचे तो 4 फंड में पैसा डाल दो। यस। तो किसी एक फंड से चालू करना है या एसआईपी चालू करनी है, तो एक एमएफडी कैसे डिसाइड करे कि चाइना में ग्रोथ ज्यादा आएगी या नास्डेक में या ग्लोबल इन्वेस्टिंग में? Is there any tip, any shortcut which you can give as a thumb rule that this is what you should do? Where should he invest? Because he has zero idea about international funds. करेक्ट। सो आई वुड से द स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी अ ग्लोबल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। जिस तरह से अगर आप किसी भी इन्वेस्टर को आज कोई भी, मान लीजिए आप एज एन एमएफडी, हम किसी इन्वेस्टर के साथ बैठे हैं जो जिंदगी में पहली बार इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना कोई इक्विटी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप एकदम से उसको 6-7 प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे। आप सबसे पहले उसको सिंपल बोलेंगे कि एक काम करो, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दो, तो यू एटलीस्ट गेट द एक्सपोजर, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, गेट ऑन टू द लर्निंग कर्व। तो सेम वे आई वुड से फॉर ग्लोबल ऑल्सो, ग्लोबल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट Okay. एकदम इजी टू अप्रिशिएट, क्योंकि आपको वो ग्लोबल प्रोडक्ट जो है वो यूएस में भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना में भी इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे इमर्जिंग मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, यूरोप में इन्वेस्ट कर रहा है। तो फंड मैनेजर, यू आर बैकिंग द फंड मैनेजर की कहीं भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास एल्बो रूम है, आप वहां जाके इन्वेस्ट कर लीजिए। as the understanding gets better, as the awareness gets better, as the allocation goes higher, then you can start thinking about things like China and Nasdaq and all that. So I would say step one, global diversified, with the understanding, with the passage of time. Step two, China, Nasdaq. I would say that is the way to look at it. Okay. A lot of people are asking, and even I'm interested to know, are all your funds accepting money and what is the way? Because सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी एमएफडीज को क्या हो रही है, किस फंड में किस एएमसी में पैसा लगाए, जब शुरू करते हैं फंड ही बंद हो जाता है restriction की वजह से. So if somebody wants to look at Axis global funds, Yes. which are the funds who are taking money and what are the chances of those funds hitting the cap, and what is the rationale, what is the logic, what is the formula? Somebody is asking when these funds are capped. Can you explain? तो सबसे इसका जो ओवरऑल एक रीजन है वो ये है कि पूरा जो एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक ग्लोबल लिमिट सेबी ने और आरबीआई ने मिलके एलोकेट की थी। और एक बारी जब फ्लोज इस कैटेगरी में आने लगे तो हमने देखा कि वो लिमिट हिट हो गई है। तो अब वो ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट हैज बीन हिट। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल फंड्स नाउ कैन नॉट टेक मनी। तो जब आप देख रहे हैं लास्ट 12 मंथ्स में फंड्स आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली इज दैट द फंड्स आर गेटिंग लिमिट नॉट बिकॉज देयर इज न्यू लिमिट, but because maybe some of the older investors have redeemed, or some, because of that redemption, some elbow room has opened up to accept new investors. So the same thing has been happening with other fund houses. Selectively they open the schemes and that elbow room is there. Unfortunately this situation is going to be like that till industry wide limits go up, and there is no real visibility on that right now. Even for Axis, the same situation. So we have pretty reasonable elbow room because we've got some redemptions in some of our schemes, which we have now decided to use
to open up all our equity funds, all our global equity funds. तो हमारे जो 4 मैंने नाम लिए, all 4 are today open for subscription. MFDs have the flexibility. Of course, I had suggested a certain route where global diversified people can consider, but basis their own understanding and the client understanding, अगर उनको कोई भी fund preference ज़्यादा है, किसी और fund में ज़्यादा preference है, the good news today is that all of our funds are open. So definitely people should take advantage. What you said, I have a question here. Sorry to interrupt, but I have a question here. This limit that you have can be used by other mutual fund and scheme also, right? So हर फंड हाउस का इन हाउस एक लिमिट मॉनिटरिंग फॉर्मूला होता है. Okay. So as per the regulation, you have X limit and the other AMC has Y limit, and the overall limit is there. That is right. So आज हमने हमारी जो लिमिट हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे कंट्रोल में है. तो हमने जब रीओपन किया है तो हम आपको वो विजिबिलिटी दे सकते हैं कि वो अब कैसी चल रही है और वो लिमिट कैसे यूज अप हो रही है. एक चीज जो अच्छी बात है कि चूंकि लास्ट अच्छी, it's a question of perspective, but given the markets have been so tough, global markets last 12-15 months, it is not that there is a huge push to get flows into this. So there is a lot of apprehension. So there is not a big wave of flows anyway coming. So in that sense, I think there is some elbow room available to all of us, especially for sophisticated MFDs, sophisticated clients, those who want to come. I think there is a good elbow room. Second thing I would suggest is try for SIP also, because even when limit has been a challenge, you see most of the fund houses, we have tried to protect the SIP as much as possible. So at least that, we can try to sustain and maintain through that way. At least we try to get it. Of course, the limit situation is dynamic, so it's very difficult for me to say how things will look 3 months, 6 months from now. So definitely, I would say one suggestion I would have is that थोड़ा बहुत अगर आपके पास lump sum allocation का भी elbow room है तो थोड़ा please कीजिए. One comfort we can all draw is that markets have been down in last 12-15 months. तो एक थोड़ा सा हमको वैसे भी naturally एक from an entry point perspective, it is not that we are coming at a euphoria or at the time when markets are very very rapidly have risen. तो थोड़ा सा एक ऐसे time ही है जहाँ पे markets have fallen and they have been little bouncing up and down last few months from the fall that they have seen. तो probably थोड़ा बहुत लमसम से भी स्टार्ट किया जा सकता है, थोड़ा बहुत सिप से भी स्टार्ट किया जा सकता है. And what we will try to of course do is make sure that we will be as transparent as we can be on what is our situation. But as of now, the situation is comfortable. So please look at these funds. But all the funds are today. So Nina Aluwalia is asking, are Axis Global Funds fund of fund or invest in directly? So these are 4 funds which are fund of funds, which I mentioned. We also have a few other funds which invest in global stocks, but those are part of our equity fund basket. So जैसे आप में से काफी लोगों ने सुना होगा Axis Growth Opportunities Fund, yeah, Axis ESG Fund. These are regular equity funds where we have kept some carve out to buy global stocks also. But जब हम global प्योर ग्लोबल फंड्स की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ग्लोबल अल्फा या नैस्डैक या चाइना, दीज आर ऑल फंड ऑफ फंड. तो हम स्टॉक्स नहीं खरीद रहे, हम आप जो पैसा हम लोकल फंड्स में कलेक्ट कर रहे हैं वो पैसा हम एक करस्पॉन्डिंग फंड जो वहां पे है वहां पे उसमें इन्वेस्ट करते हैं. Sudipta is asking, when can we have Axis managed global funds on their own? So we have made a small start, but a significant start. As I mentioned to you, in our regular equity funds, we have started buying stocks. So again, I would look at, for many of you who are interested, I would suggest look at Axis Growth Opportunities Fund. It is a fund that has done fantastically well in terms of creating a very good diversified basket of domestic large mid stocks, but also combining that with some of the global mega cap stocks. तो आपको एक ही पोर्टफोलियो में पूरा कॉम्बिनेशन देखने का चांस मिल पा रहा है. So yes, we have made a small start. It is a big area for us, so you should hopefully see this from our side. Would you like to take this? Shankar is asking, is emerging market fund better than China fund? See, the problem that people should be aware of, and what I will suggest people to do is to look at the indexes, emerging market index. अगर आप इंडेक्स देखेंगे ना तो इंडेक्स में आपको क्या समझ में आएगा कि चाइना इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इज इक्वल टू चाइना. Almost 50% emerging market index is nothing but China and China related. So I would say कि indirect China exposure लेना की जगह directly China exposure ही ले लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट चाइनीज इकोनॉमी में डायनेमिज्म है, वो है. इमर्जिंग मार्केट में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जैसे
रशिया होता था पहले, या वो जहाँ पे इतना डायनामिज्म नहीं है. चाइना, इंडिया आर प्रॉब्ली एक्सेप्शन. तो एज अ रिजल्ट व्हाट यू आर सीइंग ओवर टाइम, इमर्जिंग मार्केट लास्ट 10 साल में, 15 साल में, चाइना प्लस इंडिया इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर, एंड सम ऑफ द अदर कंट्रीज आर बिकमिंग मोर फ्रिंज कंट्रीज, या उनका इंपॉर्टेंस काफी कम होता जा रहा है. तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स बहुत ही एक फ्लक्स में है. तो लोग भी globally they prefer buying some of these things, directly, and that is why if you see our fund also, we preferred launching the China fund directly rather than any AMC. I think there is some problem with the network. Wonderful, Ashwin. Yeah. With a final thought that one of the fund आपका you see blood on the street, and probably it should not be a very bad idea to start into international. Ashwin, can you hear me? I think your screen has frozen. I will stay with you for the next 20-30 seconds to see if you're there to say. I hope went down. I think I think now I I'm good. but I can hear you now, sir. So let's so go I don't ahead. know how much no, so it was wonderful to have you, and I think when there is blood on the street with India, and so it may not be a very bad idea to start SIPs or investing in a lump sum basis on an international market. Any final observation on this? So I would say final observation is very simple कि दूर से किनारे बैठ के इन्वेस्टिंग नहीं होती. You have to dip your feet in the water. आपको हम दूर से डिस्कस कर सकते हैं, हम थियरी भी बात कर सकते हैं, हम we can keep talking about the pros, cons, whether this is the right time or wrong time. But at the end of the day, nothing will beat the actual practical experience that you gain by trying out. And it can be a small allocation. It doesn't have to be a large allocation. But please, do. And I would say for many MFDs, maybe you could also try your own personal allocations. Some of them you could try also, see how that is going. Try a small lump sum, try a small SIP. Maybe with some of your more sophisticated clients, try it. Because आप try नहीं करेंगे, आपको वो comfort कभी नहीं आएगा. So please, don't worry too much about timing, because as I said always, जब आपको घबराना होता है, तो there are always 5 reasons to get scared, या 5 reasons. But the good news today, as Brijesh mentioned, is that the good news is that last 12-15 months have been very tough. So investing when there has been blood spilled is always, a rule of thumb is that's always a good sign always when you're coming on the back of poor. Thank you. I think there is, yeah, screen is frozen, but thank you everyone. And it was a really good chat. So I hope people could get some benefit from this discussion. I am in a hotel resort in Northeast, and connectivity is a little challenging here, but we could finish it off. I think with not much in the end, it was giving a little trouble. Thank you so much. Ashwin will continue for a few more minutes with our normal agenda. Thank you so much for being part of this event and talking and giving us some ideas about the global investing. Thank you so much. Thank you. Wish you all the best. Wish everyone all the best, and look forward to more such engagements. Thank you. Thank you so much.